Hi everyone, I hope you're all doing well. Welcome to the YouTube channel of Legal Edge. My name is Tanya and in continuing our Wisdom Wednesday series, आज हम बात करने वाले हैं about some of the important doctrines under the Indian contract law. So, as the title will tell you anyway, this is the second part in this series. If you haven't watched the first part, you can check it out on our channel. I will link it down below. And in the first part, we had covered these doctrines that you can see on the screen. We talked about doctrine of consideration, privity, promissory estoppel, implied contract, and frustration. But as I mentioned in the previous video, also, even if you're not familiar with the Indian contract law and its concept, अभी तक अगर आपने ये start नहीं करा है, so you don't have to worry, we are starting from scratch and we are going to talk about some really interesting concepts under this law. So the first doctrine that we are going to talk about is the doctrine of novation under section 62 of the Indian Contract Act. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इस सेक्शन में टेक्निकली नोवेशन, ऑल्ट्रेशन और रिसेशन तीनों की बात की गई है, बट पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम डॉक्ट्रिन ऑफ नोवेशन को डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ नोवेशन? एक एग्जांपल लेते हैं. You and I are in a contract and we just decide it's not working out for us anymore. So what we do is we create new terms and condition and enter into a fresh contract to be bound by. And this is known as doctrine of novation. जब पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट अपने एग्जिस्टिंग या ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट करने के लिए एक नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है and keeping in mind that the new contract is valid and enforceable, then this is known as doctrine of novation. But please bear in mind कि novation को apply करने के लिए the old contract must be existing and it must have been unbroken. मतलब जस्ट बिकॉज हम दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें मैंने ब्रीच कर दिया है और उस ब्रीच को रेमेडी या रिड्रेस करने के लिए हम नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, तो दैट इज नॉट नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ नोवेशन. ओके. The effect of entering into a new contract or doctrine of novation is that जो भी earlier contract था या existing contract था उससे related जितनी भी liabilities, rights, duties या obligation थे वो अब extinguish हो गए हैं. And that is why, considering that both parties are going to be affected in terms of their rights or liabilities, to enter into a new contract or to apply doctrine of novation, it is an absolute essential that there is a mutual consent amongst all the parties of contract. मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरली कोई नए टर्म्स और कंडीशंस नहीं एनफोर्स कर सकता है. दैट इज टू से, अगर आज मैं डिसाइड करती हूँ बिटवीन द टू ऑफ अस ऑन माय ओन दैट वी आर नाउ गोइंग टू बी बाउंड बाय एन entirely different contract based on entirely different terms, rules or set of instructions, so it is not going to be enforceable before the court of law. And in case of any issue or legal instance that takes place between us, we are still going to be bound by the old contract. Now, there are two ways how doctrine of novation can come into effect. The first is when there is a change of contract. That is to say, parties वही हैं, but terms or consideration change हो गए हैं. So let's take an example. A and B were in a contract. A ने B से कुछ पैसे उधार लिए थे. He had taken a loan, and they were in a contract where A was supposed to pay certain EMI based on certain interest or however that played out between both of them. But now what A suggested was that instead of him paying B every single day, what he's going to do is he's going to mortgage some of his property to be equivalent to the loan taken. And once the entire thing is paid off, that is when he'll get his property back. Okay, so now there is a new thing in consideration and there is a new way that this is going to be dealt with. Parties A और B ही हैं, लेकिन terms पूरे change हो गए हैं, conditions नई आ गई हैं, obligation, rights और duties change हो गए हैं. So that is one way how doctrine of novation comes into effect. The second way is when there is a change in the parties. This usually happens, for example, एक partnership firm का example ले लीजिए. So Indian Partnership Act requires कि जब भी कोई पार्टनर लीव करता है फर्म को या फिर a new partner joins, the partnership dissolves and a new partnership comes into being. So A, B and C are in a partnership. C decides to quit and instead D comes into the partnership. पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई और एक नया पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट बना विथ 3 न्यू पार्टीज. टर्म्स एंड कंडीशंस शायद वही हो, डिविजन शायद वही हो, प्रॉफिट्स का शेयरिंग शायद वही हो, but now there are 3 different parties that we are talking about entering into a contract. So this is known as a different kind of novation of contract. Okay, so हम दो important case laws discuss करने वाले हैं. The first case law is Lata Construction versus Dr. Ramesh Chandra Shah.
सो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट और न्यू कॉन्ट्रैक्ट के बीच में इनकंसिस्टेंसी नहीं हो सकती है। बेसिकली अगर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अगर नया कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि जब तक ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स फुलफिल नहीं होते हैं या ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट का कोई टर्म कंप्लीट नहीं होता है तब तक नए कॉन्ट्रैक्ट के टर्म नहीं आएंगे, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नोवेशन. In this case, the court is going to rely on the old contract itself to see how the transaction will take place. यहाँ एक कंपनी का मैटर था और इसमें उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करा था which was reliant on some of the terms of the old contract, but the court said this is not going to be applicable, and under section 62 they are going to read this as the old contract itself. The new substitute will not be termed valid. The second case was Shankar Lal Damodar case, और इस केस में बात की गई थी about the validity of the new contract. So like I said, it is extremely important कि नया contract valid और enforceable हो. It cannot be illegal, void or unlawful. So एक mortgage deed की बात हुई थी, नया contract बना था for a new mortgage deed, but the mortgage deed never got registered, and that is why it was not enforceable as a contract. Hence, here also court said since the new contract is not enforceable anymore, it is not going to be considered as a successful application for doctrine of novation, और हम पुराने contract पे ही rely करेंगे for seeing what right, duties, obligations or remedies are being sought in the current case. So with this, we're going to move on to the next doctrine on our list. यूजुअली डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर की बात की जाती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पर आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड द इफेक्ट दिस डॉक्ट्रिन हैज ऑन दिस पर्टिकुलर लॉ. सो व्हाट इज वेवर? सबसे पहले तो जब भी कोई पार्टी वॉलेंटरीली अपना कोई राइट, बेनिफिट या प्रिविलेज अबैंडन या रेलिंक्विश करने के लिए तैयार होती है तो दैट इज नोन एज वेविंग ऑफ. बेसिकली अगर किसी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में अपने बेनिफिट या अपने राइट को कोई भी पार्टी गिव अप करने के लिए तैयार हो जाती है और दे एक्सेप्ट that some performance that was promised in a contract is not going to be executed in their favor, then that is known as waiving off. With me so far? What are the elements that constitute this doctrine of favor? सबसे पहले तो there must be an existence of a right. Obviously, unless कोई right exist नहीं करता है, हम उसे waive off कैसे करेंगे? Secondly, I should have prior knowledge that there is a certain right that exists in my favor. If the party is not informed or does not know that a right exists, they are not going to be able to agree to waiving it off. Thirdly, I must be making a fully informed decision and I should know what is my right, what does it entail, and what is going to be the consequence of me waiving it off. Section 63 भी इसी चीज के बारे में बात करता है. Since waiving off usually entails a person benefiting out of it and an other person bearing some kind of loss in terms of their right, Section 63 कहता है कि this waiver must happen with mutual consensus. मतलब दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए कि ऐसा कोई वेवर हो रहा है एंड दिस रिक्वायर्स प्रॉपर कम्युनिकेशन फ्रॉम पार्टी ए टू पार्टी बी, द पार्टी हु इज वेविंग इट ऑफ एंड द पार्टी इन हुज फेवर द वेवर इज टेकिंग प्लेस. कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ ही ये वेवर एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज दैट राइट इज स्टिल गोइंग टू बी एनफोर्सिएबल एट द हैंड ऑफ द पार्टी जिसके फेवर में वो क्रिएट किया गया है. Now there are two particular exceptions of what rights can be waived off and what cannot. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपना कोई भी फंडामेंटल राइट वेव ऑफ नहीं कर सकते हैं. सो इफ देर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आइदर रिक्वायर यू टू वेव ऑफ अ फंडामेंटल राइट और दैट पुट अ कर्बिंग on your exercising of fundamental right, then those are not valid and you cannot waive off your fundamental right. Secondly, अगर कोई statutory right है जो public interest के ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, which has been made for the benefit of the general public, then that also cannot be waived off. पर इसमें essential element ये है कि public interest का factor important होना चाहिए to the statutory right that is being waived off. So if you look at the cases on your screen, the first case is where the court discussed कि waiver एक gratuitous act भी हो सकता है. मतलब इसमें कंसिडरेशन होना नेसेसरी नहीं है. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ए एक्सक्यूजेस सर्टेन परफॉर्मेंसेज टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम बी, अगर वो कुछ चीजों को वेव ऑफ कर देता है तो जरूरी नहीं है कि बी उसके लिए उसे रेन्यूमरेट या कॉम्पनसेट करे. दिस कैन हैपन ग्रेटिटुअसली.
सेकेंड केस में ये कहा गया था कि वेव करना सबका राइट है एंड देर इज नो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन ऑन विच पार्टी कैन वेव ऑफ सर्टेन राइट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, as long as it does not fall on the two exceptions that we have just discussed. With that, we'll move on to the next doctrine. So, doctrine of ratification is enshrined between section 196 to 200 of the Indian Contract Act and is based on this Latin maxim, जिसका मतलब होता है any act of ratification is going to be dragged back and considered as equivalent to a prior command of the authority. एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज किसी ने आपके बिहाफ पे कोई एक्ट कमिट करा है या आपके नाम से उन्होंने कोई एक्ट कमिट करा है. अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लें या तो आप एडमिट कर लें दैट इट वाज डन ऑन योर बिहाफ और थ्रू योर एजेंसी और वाज डन विथ यू एज अ प्रिंसिपल, या फिर आप उसे डिसोन कर दें और कह दें कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है. When you do the first thing, it is known as ratifying, agreeing, or giving in to something. And this is the doctrine of ratification. Doctrine of ratification ये कहती है कि when somebody does an act on your behalf and then you ratify to it by accepting it, then you are also going to be bound by the same terms as if you were the one who had given the original command or the authority about it. So doctrine of ratification is quite a common principle, especially between agent and principal relationship, where a principal adopts the acts of an agent. So what are these conditions that makes a ratification a valid ratification? First of all, the act must be done on behalf of another person. Secondly, जिस person के behalf पे आप ये act कर रहे हैं, that person must be in existence. जो इंसान का आप एक्ट ratify कर रहे हैं, so you must be competent enough to authorize that act. Competency as given under section 10, which we discussed in this video already. Ratification must be done with complete knowledge. If you are unaware that an act is being done on your behalf or what was the act or what are its consequences, then that ratification is not going to be valid for you. Next, the object or the act that you have to ratify must be lawful. अगर किसी भी illegal या unlawful act या objective of that act को आप ratify करते हैं, तो that will not be valid. The contract is going to be unenforceable or void either ways. Okay, this is a common principle between principal and agent relationships. Like I said, तो एक principal और agent का relationship इससे automatically create हो जाता है because you are ratifying or accepting somebody else acting on your behalf. There must be proper communication between the principal and agent about the act that is being done or being ratified to. And lastly, this must be done within a reasonable time frame. As I already said, ratification is a retrospective act. मतलब जो चीज हो चुकी है हम उसकी तरफ अपना acceptance दे रहे हैं. So that time should not be such that it lapses. It has to be done in a reasonable time frame. So in the Pramila Devi case, it was said that there must be an intention of the party to ratify to the act. Basically, when we talk about knowledge or complete information or communication is what leads to creation of an intention. So जब तक party का intent नहीं हो to ratify, ratification is not going to be considered valid and the other person cannot be bound by these acts. In the case of Gauri Shankar, it was said that the act has to be lawful. अगर कोई act illegal हो या unlawful हो तो आप उसकी तरफ अपना ratification या acceptance नहीं दे सकते हैं. There is the same exception that applies to acts of a minor also. Under the Indian contract law, आप minors के act को भी ratify नहीं कर सकते हैं. An act done, a contractual act done by a minor is not going to be considered as valid and you cannot ratify towards it. A and B are in a contract. A is a farmer, B is a buyer. A B को कहता है कि वो उसे 50 किलो गेहूं देगा. बट बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस, बैड मॉनसून, वो डिलीवर नहीं कर पाता है. बट व्हेन दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रिएटेड, तब उस गेहूं के लिए, ताकि वो ग्रो हो सके, उसके लिए सारी फर्टिलाइजर्स और जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो आ सके, इसलिए बी ने ऑलरेडी एक एडवांस पेमेंट ए को कर दिया था. नाउ बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन दैट 50 kgs ऑफ wheat was never delivered to B. इस सिचुएशन में B can apply the doctrine of restitution and ask A to give that money or advance back to him. Section 65 on the Indian Contract Act talks about this particular doctrine of restitution. Restitution का मतलब होता है restore करना या rebuild करना
या किसी को स्टेटस quo पे लाना। नाउ बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, वो वॉइड हो गया, वो अब एनफोर्सिएबल नहीं है, इट हैज बिकम इम्पॉसिबल टू कंप्लीट। सो द अदर पर्सन जिसको ये लॉस हुआ है, उसको स्टैटस को पे लाने के लिए, उसे वापस अपनी ओरिजिनल मतलब प्री कॉन्ट्रैक्ट स्टेज पे रिस्टोर करने के लिए, A can be asked to give that amount back by this particular doctrine. I hope this was clear as an example. Let us talk about the applicability, essentials, and exceptions of this particular doctrine. So, first of all, this doctrine comes into application when, during the course of the contract being performed, or when the transaction is already in the ruling, तब वो जाके void हो जाता है. So it is based on the principle of equity that because of a contract becoming void, no party should be unjustly enriched at the loss of an other party. ओके, द एसेंशियल्स ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कि फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों पार्टीज के बीच में एक वैलिड और एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था. बोथ द पार्टीज मस्ट हैव बीन कॉम्पिटेंट टू एनफोर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. एंड थर्डली, देयर मस्ट हैव बीन अ फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट को करना अब पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से वन पर्सन इज बिकमिंग अनजस्टली एनरिच्ड at the cost or at the loss of another person. The exceptions to this are कि doctrine of restitution cannot be applied if the contract at the moment of inception was void. मतलब void ab initio contract के लिए आप doctrine of restitution नहीं apply कर सकते हैं. Contracts that were made between a minor or a major or between two minors, उसमें भी ये application नहीं कर सकते हो to benefit either of the parties under the contract. And thirdly, this is also not applicable in case the object or the act on which you were creating the contract or agreement was illegal or unlawful. It is eventually during the process of the contract being performed that the contract has become void, and to bring the scales to balance, to bring both parties back on the even status quo or even playing ground, is when we apply the doctrine of restitution. So अगर केस की बात करेंगे, so Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh is a very famous case. It is going to be read a lot in Indian Contract Act, जहाँ पे एक माइनर और एक मेजर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. एंड यहाँ पे there came a distinction between the English law of restitution and the Indian law. So English law में अगर minor के साथ भी कोई contract होता है, तो आप उन्हें कह सकते हो to restore the major back to the certain position. However, India में minor के साथ कोई भी contract में enter होना is not valid. Even if the person was not of the knowledge that the person that they are agreeing to contract with is a minor, the minor is going to be protected first. And in terms of monetary gains, मतलब जो specifically money से related होता है, उसमें you cannot ask the minor to restitute or restore the other party back to their status quo. However, अगर कोई goods या ऐसे possessions की बात हो रही है जो ट्रैक किए जा सकते हैं, जो ट्रेस किए जा सकते हैं, सो इन दैट केस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अगेन the court can ask to restore the other party who had entered into such a contract. क्वांटम मेरिट का एक सीधा सा मतलब ये होता है कि वी गिव समवन व्हाट इज ड्यू टू देम, या फिर यू ड्यूली पे समवन फॉर व्हाट दे हैव अर्नड बाय देयर ओन वर्क. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके दो डिफरेंट एप्लीकेशन होते हैं. फर्स्ट, अंडर सेक्शन 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज कि जब कोई इंसान एक लॉफुल एक्ट करता है, विच इज आवर फर्स्ट एसेंशियल, द एक्ट मस्ट बी लॉफुल. Secondly, towards another person with a non-gratuitous intention, which is our second essential, जिसका मतलब है कि they expected some consideration, remuneration or benefit in return or repayment in return. And third is lawful non-gratuitous act से the other person is benefited or they are enriched because of it, उससे उनका कोई फायदा होता है, then the person doing the lawful act has a right to ask for such repayment by the doctrine of quantum merit. The second application under the Indian Contract Act is when we are stipulating or calculating damages. यूजुअली एक कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होता है जो कहता है कि अगर ए या बी में से कोई ब्रीच करता है तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डैमेजेस और कॉम्पेंसेशन दैट दे विल ओ ईच अदर. बट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच इज साइलेंट अबाउट इट, तब वो डैमेज का अमाउंट क्या होगा उसे स्पेसिफाई करने के लिए हम डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट को यूज करते हैं. उसमें भी देयर आर 3 स्पेसिफिक थिंग्स दैट वी लुक इनटू. हम सबसे पहले देखते हैं कि हु इज द पार्टी दैट हैज डन द ब्रीच और उसका कॉन्सिक्वेंस कितना है, मतलब डैमेजेस कितने हुए हैं. Secondly, the act or the omission
का कितना रिलेशन है विद द डैमेजेस, मतलब व्हाट इज द रिमोटनेस और व्हाट इज द कनेक्शन और व्हाट इज द नेक्सस बिटवीन दीज टू थिंग्स. एंड thirdly, could this party have done something to curb or lessen the damage, and depending on whether they did it or not, that is how these damages are quantified by this particular doctrine. There are several times when this doctrine can be applied. A few of them are A, जब agreement बाद में after the transaction has already come into process तब जाके वो void हो जाता है, जैसे हमने doctrine of restitution में पढ़ा था कि A has every right to be restored to his status quo by B, पर वो कैसे होगा restoration, उसमें B का कितना loss हुआ है, A का कितना extra damage हुआ है, उस सब चीजों को quantify करने के लिए हम quantum merit का use करेंगे. सेकेंडली, जब कोई नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट है, जैसे हमने सेक्शन 70 में पढ़ा, तो उस नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट में कितने डैमेजेस बेयर करने पड़े ए को, या फिर उसमें उसका कितना लॉस हुआ, या फिर बी ने कितना बेनिफिट करा फॉर विच ही एब्सोल्युटली ओज ए इन इक्वल अमाउंट्स ऑफ रेन्यूमरेशन और कॉम्पेंसेशन. सो दैट इज अगेन डिटरमिन्ड बाय दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन. द थर्ड इज, जब कोई दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में हो, ए एंड बी आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्ट्स ऑफ बी, A is not able to fulfill his obligations under the contract. He is not able to complete it, because of which he might not be able to gain his consideration or is facing certain losses. Then also, by this particular doctrine, they can ask him to pay the certain amount to A. And lastly, अगर कोई contract हुआ है, for example, but it is not well performed, it is not well done. So technically, the contract has not been absolutely performed to the terms of the contract, but it is done in technically हो चुका है, but not in spirit. तो in that case, उस चीज को quantify करने के लिए कि how much should be owed and how much not, how much can be waived off, उस चीज को डिटरमिन करने के लिए भी हम इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इन द पर्टिकुलर केस दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन, द कोर्ट सेड कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को यूज कर सकते हैं टू स्टिपुलेट एनी सच डैमेज दैट इज हियर, because this remedy is an independent remedy. It is not reliant on any particular law of liability that might arise. It is not reliant on any particular clause. It is an independent remedy, and it can be availed if a person is facing any losses while the other person is becoming unjustly enriched because of their said non-gratuitous acts. With this, we come to the end of the video. Thank you so much for sticking till the end. I hope you enjoyed this video. I hope you have taken a lot of takeaways and learned something new. If you like such content, then please like the video, subscribe to the YouTube channel of Legal Edge, drop your comments down in the comment box. Do remember to follow us on our Telegram, Instagram, as well as our Facebook pages. We keep churning out a lot of interesting content and keep updating you with a lot of information regarding all law entrance examinations across the country. If you have any questions, please feel free to call the number on the screen. It is your one-stop contact for all questions Legal Edge. Thank you so much.